Okay, Sairam children, welcome to EVS class. We will start the class by chanting Omkar. All of you join your hands and close your eyes. Sairam, dear children, last day we were discussing. Sairam, beta mic off रखिए, please. Okay. Last day, yes, Srishti Sairam. Last day we were discussing about Vasvas form. Okay, the process of cultivation. I want to ask to Arjun. Arjun, on the mic. Yes, ma'am. What was the first step for the cultivation we have learned? What is the first step? First process. What is it? Harshika Sairam. Okay, Harsh Pasandya. Okay, Harsh Pasandya. Yes, ma'am. Yes, give me the answer. What is the first step for the cultivation? Any Loosen the crop? soil, ma'am. Yes, Loosen the soil and make it soft. yes. This process is called preparation. Okay, preparing the field for cultivation. Cultivation of any crop. कोई भी crop हो, उसके लिए सबसे पहले they have to prepare the land for cultivation. For that they have to loosen the soil and they have to add manure. They have to give proper irrigation. पानी देना. Okay, so that is the first step. Now, Arjun, what is the second step? Arjun, face dikhao. I want to see your face. Arjun Sairam, Yes, ma'am. where are you? Yes. Arjun, what is the second step? Ma'am, sowing the seeds. Yes, very good. Very good. Yes, Now, I ma'am. am asking to Adarsh, you tell me. Adarsh Sairam, Yes, ma'am. which tool or implement is used to sow the seed? Which Ma'am. implement? Yes, your sound is not coming clear, better. Arjun? Sorry. Adarsh Yes, off the mic. ma'am. Okay. Wait, Arjun. Sorry. Adamya, on the mic and give me the answer. Which implement or tool is used to sow the seeds? Ma'am, kulari. Kuladi is axe for cutting the stem tree. Adamya, Yes, ma'am. Adamya, which implement is used to sow the seeds? That helps to sprinkle the seeds in proper places. Yes, Prisha, you give me the answer. Ma'am, kulji. Courage. Courage. Correct. Courage. Okay. Yes, you tell me what is the implement used for loosening the soil in the lesson? मैम पर वो उग जाती है सारी हाँ, उसका नाम क्या है? अब वो नहीं पता Ishita, you gave me the answer. मैम खुंटी Yes, Kunti is a local word. Okay, in Karnataka they use, है ना? So that term. Okay, local term. It is used to loosen the soil. Okay. Now, next one, Divya, you give me the answer on the Yes, mic. ma'am. So first we said that the process, first step is preparing the land or field for the cultivation of any crop.
and second one is sowing the seed. Next, what is the next stage? What is the next process? Soil. Divya, Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा. Divya, you think about it. Sri Haripriya, give me the answer. These sprouts appear. Sprouts. Okay, sprouts comes. Sprouts come out, है ना? Okay, sprouts आने के बाद what is the process? तब हमें क्या करना चाहिए? That is the question I am going to ask to Kavyansh. Kavyansh? Yes, ma'am. हाँ, give me the answer. Video दिखाओ. Farmers now that the onion crop is ready can We didn't reach there. Onions are not ready. Only sprouts came out. Sprouts आने के बाद उसके ऑनियन की प्लांट्स कोई भी क्रॉप है उसके पौधे होंगे उसके साथ क्या हो सकता है. हर्षिका बोला. काव्यांश माइक ऑफ करो. आप नहीं सुन रहे. वीडियो ऑन करो. गर्वित और काव्यांश वीडियो ऑन करो. उनमें से उन पौधों में से जो ऑनियंस आएंगे वो अनहेल्दी होंगे. नहीं, उसके साथ क्या क्या आ सकता है? क्या आता है उसके साथ? What will also grow? Unwanted plants. What are the unwanted plants called? Weeds. Weeds. Okay. So, Subhanshi, you tell me, what should we do when the weeds are there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What? गर्वित आप वीडियो ऑन करिए प्लीज. मुझे देखना आपको. ओके शुभांशी, आप ये बताओ वीड्स को क्या करेंगे हम? What should you do? What should the farmers do? Suppose in your garden also weeds are there. What should you do? गर्वित स्टिल बैठो, उसको हिलाओ मत. मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? Question is that if weeds are there, what should you do or the farmers do? प्रीति बोलो. प्रीति बोलो. मैम उसको काटेंगे क्योंकि वो पेड़ के वो. हम काटेंगे नहीं, रिमूव ही करेंगे, रूट से निकालेंगे. काटेंगे तो फिर से आएगा. रिमूव करना, निकालना पड़ेगा. शिवांशी वीडियो ऑन करो, मैं देखूं आपको. मैं उसकी जड़ निकाल देंगे. हाँ, जड़ से निकालना पड़ेगा. शिवांशी अभी आ गई समझ में? We have to remove the weeds. Now, प्रियांश आप बताओ, what is the process called? The removal of weeds from the garden or fields. Okay, गर्वित दे दो आंसर. गर्वित दे दो आंसर. The process. Yes, weeding. What is the spelling weeding? WEEDING. Okay. Now Vishwajit on the mic. Yes, ma'am. Vishwajit. Yes, where are you? Vishwajit, face दिखाओ. सुंदर सुंदर फेस तो दिखाई नहीं रहा है. चलो, weeds भी निकाल दिया है. क्यों हम weeds निकालते हैं? Why do we remove the weeds? मैम क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स का न्यूट्रिशंस ले लेते हैं. Yes. Our plants will become unhealthy. No. Yes, yes. Now, एक मिनट बेटा, मैं सबसे पूछ रही हूँ. Yatin on the mic. Yatin, Saira.
Yatin is not there. He is not replying. मैम Yes, यतीन इधर है पर मैम वो कुछ बोल नहीं Srishti. रहा. Srishti Sairam. माइक ऑन करो. Yes, ma'am. सृष्टि वो वीडियो क्यों ऑफ रखा है बेटा? वीडियो ऑन करो. चलो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, वीड्स को भी निकाल दिया है और उसको ग्रो करने के लिए, अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? व्हाट शुड बी ऐड टू बिकम आवर क्रॉप हेल्दी, ग्रो आवर Ma'am, क्रॉप? can you repeat the question? What should the farmers add to the crop to grow healthy? We should remove the weeds. Huh? We should remove the weeds for take our plants nutrition and giving water and sunlight. Okay. Good. So we have to add manure. खाद डालना पड़ेगा. पानी भी proper time में we have to give water also. That is called irrigation. Okay. Now, Saurabh, Sairam. Yes ma'am. Saurabh. इसके बाद, how do you know the onion crop is ready for the harvest? कटने का टाइम हुआ, कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू नो? जब अनियन की जो लीफ है वो पीली हो जाएगी तब. पीली होके फिर ड्राई हो जाते है ना. वेरी गुड. इसके बाद फिर अदम्या ऑन द माइक. Yes ma'am. Now, how do the farmers know that the onions are ready to take it out? How do the farmers know onions are ready to take out? Farmers know that with the size. How do they know? With onion size. We can't see the onion size because it is underground stem. Just before Saurav gave the answer. Ishita, can you? Can I, ma'am? Ishita? Yes, ma'am. How do the farmers know? मैम फार्मर्स को जब पता चलता है जब अनियंस की जो लीव्स होती हैं वो येलो होने लगती हैं और ड्राई होने लगती है. Yeah. Have you heard? Its leaves turn to yellow, and after that what happens? It dries up. Okay. Now, next question goes to Priyanka. Yes. मैम लेकिन अनियन की लीव ड्राई होने लगेंगी तो फिर तो अनियन खराब होता जाएगा ना, जैसे कोई भी ट्री. नो बेटा, वो ग्रीन से येलो के ड्राई हो जाएंगे, अनियन तो हेल्दी रहेंगे, लेकिन राइट टाइम में निकालना चाहिए. दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन, है ना? ओके. All the food, it is stored there. It is a bulb, underground stem. It is not a root. We can see the root below the onion. Small, hairy roots. Okay? Okay. Yes. Now I am asking to yes, Sri Haripriya on the mic. Yes, ma'am. What happened if the farmers are not removing or not taking out the onions at right time? मैम अगर फार्मर्स को सही टाइम पे नहीं निकालेंगे तो वो अंदर रह के खराब हो जाएगा और सड़ जाएगा. The onions will rot itself in the ground, and after that what happens? Their hard work wasted, and they will lose the money also. It is a loss for them, isn't it?
Farmers are doing work for earning money. ma'am. Earning money. Yes, ma'am. Okay. So next question goes to Preeti on the mic. Yes, ma'am. इसके बाद मैंने आपको शायद बताया नहीं होगा ना, उसके बाद वाले पार्ट प्रीति में बाद वाले पार्ट बता रही हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। हाँ, आपको ये ध्यान रखना, नेक्स्ट ईवीएस क्लास में मैं ओरल टेस्ट लेने वाली हूँ। We have learned 2 lessons. One is Anita and the honeybees, and next this one was form. So I will take oral test on the coming class. In the coming class, I am going to ask questions. Oral test. So be prepared for that. Now I am going to continue this lesson. Okay. Let me to share the screen. आप क्वेश्चन आंसर्स पूछोगी क्या उसमें? Wait. Oh, 1 minute. I will show you the textbook first, after that question answers. Okay. Screen is there. See Haripriya? मैम आप जो प्रेजेंट कर रही हैं वो लिखना है? Yes, ma'am. बस मैम अभी मैं I am मैम taking out. आज ही लूंगी। मैम ये आज text- लूंगी क्या पेपर? No, beta. Next class. Oral test in the next class. Come a day, Okay, ma'am. देखना. Okay, according to your timetable only. Okay. So children, मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम हमें ये सब प्रोसेस लिखने हैं। wait. I will tell you later. First we have to complete this. See, this boy is, what is his name? Arjun. What is his name? This boy. Arjun. जल्दी बोलो, इसका नाम क्या है? What is his name? Others. Yes, बेटा आप बोलो. मैम भावाल। Yes. मैम भावाल। मैम शुभांशी। Shivanshi, you give answer. मैम पसवाल। Aspa, yes. पसवाल। Yes. All of you. मैम Yes, I heard. All of you keep your mic off. कौन है नहीं सुन रहा है अभी? किसके माइक ऑन है अभी? मैं वापस आओ उधर. Okay, चलो. See, the after sowing the seeds, it is the baby plants came out. Along with the baby plants, weeds came out, and they removed the weeds, and also they gave water and fertilizer, manure also, and the onion crops are up to the level of his knee level तक उसका growth हो गया. After that it turned to yellow, and after that it dried up. Then these people are started to taking out the onions from the ground. On that day, Vasva cannot go to school. Yes, I am going to ask to Divita. Divita Saira. Yes, ma'am. In this lesson, it is said that Vasva cannot go to school during this time, at the time of harvest. Why? जल्दी नहीं निकाला वो खराब हो गया तो चाहिए देने के लिए। Beta, your sound didn't come clear. I think you said that for helping his father. This one was your answer? Saira? Yes, ma'am. Okay. Now, I am asking to Garvit. Garvit, Saira? मैम Do you help your parents, elders, in any work? यस I'm मैम telling- What way? Ma'am. Garvit. Ma'am, the onion crop. Garvit.
सायरा गर्विता बोलो. My Okay. help mother feeding room. Okay. Now Pari, Sairam, Pari. Can you hear me? Yes or no? बेटा मैं नाम लिया तो यस बोला करो, तो मैम को पता चलते क्या यस. मैम मुझसे पूछिए, मुझे आता है. अस्मिता आप ऑन करो माइक. साईराम. यस मैम. बेटा आपको ये दिख रहा है, एक टूल रखा है इधर, दिख रहा है. दो आंटियां बैठी है, एक वासवास में अम्मी है और वासवा की ऑन है. एक एक टूल रखा है काटने के लिए, देखा. दिख रहा है. हाँ, यस मैम. इसका नाम है, बता सकते हो आप? नहीं. मैम खुंजी. ओके. मैम नो मैम खुरपी. नो. कृष्णा. मैम मैम स्पेड. सब्जी काटने का. कॉल्ड इलीच. मैम एलीज. मैंने बता दिया. अभी बंद करो तो माइक. माइक बंद करो. माइक बंद करो. Here, this tool is used to cut the dry leaves. We can see the onions with the dry leaves here. And after cutting, after cleaning it, they are putting in the basket. After that, these people are filling the onions in the sack. बोरी भर के उसको बांध के रख रहे. After that, they have to sell it in the market. For that, Vasva's मैम father- हार्वेस्टर. मैं ट्रक की बात कर रही हूँ बेटा. क्या? अभी नहीं देखना बेटा, मैं बता दूंगी. ओके. सो आफ्टर द हार्वेस्ट व्हाट हैपेंड, these people are filling the onions in the sacks and they are selling it. They are going to the big market for selling the onions. For that they have to use a vehicle. Baswa's father uses a truck to carry the onions to the market. Okay. Now I am asking to Krishna. Sairam Krishna. यस मैम. Krishna, ये बताओ. What are the other vehicles used to carry the vegetables to the market? We can see so many vehicles are carrying vegetables to the market. मैम कैन आई? Wait. Yes, Krishna, off करो. अब कौन पूछ रहा था? आदम ही पूछ रहा था. यस. Give the answer. ट्रैक्टर्स. Yes. Trolley tractor. Yes. Trolley tractor and what? टेम्पू. Okay, tempo. Okay, very good. और इसके बाद प्रियंका Ma'am, आप भी आंसर आप भी दे दो. इसके बाद क्या है? ट्रैक्टर के अलावा, टेम्पो के अलावा और क्या क्या व्हीकल यूज कर सकते हैं हम? व्हाट आर द अदर व्हीकल्स? मैम मैम हल. बेटा मैं किसका नाम लिया? मैम औरत के बच्चे भी केयरफुल. देखो आप लोग बात नहीं मान रहे ना. मुझे आपकी आवाज सुनना है. यशस्वी is there? यशस्वी. यस मैम. यशस्वी sir. यस मैम. आप आंसर दे दो यशस्वी. What are the other vehicle that you have seen that the vegetables, they are using that vehicle to carry the vegetables to the market? So you have to give the name of the vehicles used to carry the vegetables. Ma'am, yes. मैम बुलॉक कार्ट. तो आंसर दिया है. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. यश आप बोलो. मैम कैमल कार्ट. कैमल कार्ट. ओके. मैम
मैम मैम Yes, yes. मैम टांगा Yes. Okay. Now मैम all of you. Okay. Now all of you listen me. We have done. मैम शिवांशी शिवांशी वेट करो अभी ध्यान से सुनो मैं एक बात समझाऊं। सबके माइक ऑफ रखें प्लीज चिल्ड्रन लिसन these are the process of the cultivation of any crop preparation of the field then sowing the seed proper irrigation and manuring then next one is removing the seeds that is sorry weeds that is weeding after that they have to take out or harvest the crop and they have to clean the crop harvest जो है crop पे उसको clean करना after that they have to fill it in either sack or a trolley okay then they have to carry to the market using different vehicles and they have to sell it in the market to earn money this is the process after getting the money the process is completed okay they can earn money okay children so now I am going to take the worksheet children do you understand then you can better one thing so many questions are given in the textbook you can do it what are the implements used you name you can write what is the user so you can मैम write it मैम yes कॉपी बुक में वो नोटबुक में नहीं लिखना नेक्स्ट कंप्लीट करता है बेटा माइक ऑफ रखो किसी की आवाज कर से आवाज आ रही है ओके चलो नाउ वी आर गोइंग टू सी द वर्कशीट ओके यस मैम yesterday I have given this question saying question Harshika please on the mic I want to talk to you yes you wrote the answer correct okay so you have to write the name of the implement or the tool and also the uses जैसे आपने लिखा था gestures you have to write its uses to cut and give the shape of the hedge ऐसे यूज लिखना पड़ेगा okay you understand यस मैम if you are writing for power kurpi you have to write it for digging the soil or for weeding also उसको weeds को निकालने के purpose and also if it is onion we can take it the onion from the ground with the help of kurpi also so you have to write the uses now I am going to ask to Pari is there beta Pari okay Yedin on the mic Sairam Yedin यस मैम पहले भी मैंने आपको आवाज दिया था आप शायद आप नहीं सुन पाए ओके रीड द फर्स्ट क्वेश्चन Yedin name the ah name the implements used in farming Yedin stop बेटा मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है आप फिर क्यों पूछ रहे लिखना है क्या इसका मतलब आपने देखा नहीं कल देखा तो फिर क्यों लिखना हमें हम ये कंपेयर करेंगे ये सही लिखा कि नहीं यस यस मैम रीड करो वेरी name गुड the implements used in farming and write their uses. Very good. What is the first answer? It is from the textbook. You can write some other tools also. Don't worry. I have given from the textbook only. First one. Read it. Yes, ma'am. Kunti, it is used to dig and loosen the soil. Very good. Next, Krishna. Krishna. Yes, बोलना सीखो. Yes, Yeah. बोला करो. And read it. Kurigi, it is used to sow
The seeds. What is the tool called? Courage. बोलो courage. Courage. Okay, very good. बेटा मैं नाम लिया तो यस बोला करो, ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा. ओके ओके. शुभांशी, read the third implement. Yes, ma'am. Yes, read it. Ma'am, it is used to cut Dried leaves. dried leaves and roots to the crop. Okay, of the crop. Dry leaves and roots काट करने के लिए. इसके अलावा in the house also we used to, some people used to cut the vegetables and fruits. Okay, Yes, it ma'am. is related to farming. Farming, खेती के बारे में, इसलिए हमने ये यूज किया. वैसे घर में हम लोग वेजिटेबल्स और उसको काटने के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी read by Priyansh Verma. Priyansh Verma, read the question. Sairam Priyansh Verma. Sorry, Shivanshu is there. Sairam Shivanshu. Shivanshu. Okay. Saurav on the mic, beta. Saurav, please on the mic. Yes, ma'am. Read the question, please. Very good. I say What, yes, bola karo. बहुत अच्छा. Read the what question. seeds? Yes. Read the answer also. The plants that grow in fields and gardens without being planted are called weeds. Being planted. हमने तो लगाया नहीं है, वो तो अपने आप आया है, या ग्राउंड में इसका डेड हो या उसके सीड हो, कैसे भी आ गया है ना. बस. So these are weeds. Okay, very good. Next question. Sorry. Yes. Next question will be read by Preeti. Preeti Saira. Yes, ma'am. What is weeding? Yes. The process Process. of removing weeds from the garden and field is called weeding. Weeding. बस बस वो तो हाईलाइट हो गया. सॉरी, Ma'am, बस इतना ही है. ma'am, The process of removing weeds from ma'am, garden. Ma'am, Yes. Who is calling me? मैम मैनुअल को फर्टिलाइजर भी बोलते हैं. फर्टिलाइजर. बेटा फर्टिलाइजर में भी बायो फर्टिलाइजर होता है, केमिकल फर्टिलाइजर होता है, मैन्योर जो होता है बायो वाला रहता है, उसमें काऊ डंग हो गया, हमारे जो घर से वेजिटेबल पील से, गार्डन की सॉरी फ्रूट की पील से सब डाल दिया, वो उससे खाद बनते हैं, है ना. वर्मी कंपोस्ट आप सुना है, अर्थवर्म को डालकर ये सब लीव्स को सब को उसको ये खाते पहले और डाइजेस्ट होके उसके बॉडी से निकल कर आते हैं, वो बहुत अच्छा होता है वर्मी कंपोस्ट. ओके, ठीक है. उसमें दो प्रकार के होते हैं, कि केमिकल होता है, तो बायो वाला रहता है. बायो मतलब वो नेचुरल वाला, जो मैम एनिमल्स के या प्लांट्स के. मैम क्या हुआ? इसे लिखना है. नहीं लिखना, आपको मैंने कल क्वेश्चन दिया था, ठीक है. आज मैं उसको डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं अपने आप, ठीक है, सही लिखा कि नहीं. ठीक है? तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया था, है ना. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज रेड बाय श्री हरिप्रिया. Yes, ma'am. Yes, read the question. Only question, okay? Okay. How do the farmers know that the onion crop is ready to harvest? Yes. What is the meaning?
मीनिंग भी बता बेटा, व्हाट इज द मीनिंग? मतलब फार्मर को कब पता चलता है कि ऑनियन क्रॉप निकालने के लिए रेडी हो चुके हैं? हाँ, वेरी गुड। अब इसके बाद आंसर विल बी read by दिव्या। दिव्या, read the Yes, answer. ma'am. Yes, Read ma'am. the answer. Ma'am, comes ma'am fifth. The leaves turn into yellow and they start to dry up. हाँ, ये कौन सा, which question's answer is this? Ma'am, दिव्या, yes, ma'am. four. Okay. Yes, ma'am. Yes. Next question. Dhruv is there. Dhruv is there. Sairam Dhruv. Yes, ma'am. Read this question. What happens have the always What happens if if the the onions are not taken out taken out at the at the right time? right time? Time. Right time. इसका मतलब यही है, अगर हम लोग दो फार्मर्स टाइम से अनियन को नहीं निकाला तो क्या हो सकता है? Yes. Answer will be read by Harshmeena is there. Saira Harshmeena. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Read the answer, beta. The onions will rot in the ground itself, and the farmer's hard work will be wasted. Okay. Onions will rot in the ground itself. सड़ जाएंगे. And the farmers, जो इतने मेहनत किया है, उनके पूरा काम waste. And also money waste also. Okay. Okay, children. So I will send it some more questions. Okay. And answers of 2-3 questions also. है ना? You don't know how to write the steps in or the process of onion cultivation in sequence. So I will send question and answer also. And the first part I will send the answers. You can check the answers whether it is right or wrong that you have written in the copy. You can compare it. Okay, children. So I am coming to the meet. Okay, children. So children, these are the questions and the things, the content and the learning outcomes that in the lesson. So we have already discussed. See children, the next coming EVS period, I will ask oral, I will ask questions, means it is oral test for you. Okay. So get prepared for Dhruv. क्या बोल रहा है? रीड कर रहा है क्या कुछ? ध्रुव ध्यान से सुनो, जो ईवीएस पीरियड नेक्स्ट है उस टाइम में आपसे सबसे 1 by 1 क्वेश्चन पूछूंगी 2 लेसन के। एक है अनिता एंड द हनी बी, दिस वन इज वासवास फॉर्म। ओके, डू यू? यस Yes. बेटा काव्यांश, मैंने इसके लिए मना कर चुकी हूँ, आपको चैट बॉक्स में टाइप नहीं करना है। Okay, children, so you do understand? Is it clear to everyone? Then raise your hand if you understand. Very good. ये दिन आप जब नाम लिया तो यस बोला करो, ठीक है? मैम को तब पता चलेगा. Okay, children. So we are going to stop today's class by Shadi part. Turn your hands, close your eyes, mic off. शांति शांति शांति. सायराम चिल्ड्रन. अर्जुन बाद में जाना. Saira ma'am, thank you ma'am. Saira ma'am, thank you ma'am. Thank you, ma'am. Take care. Thank you, ma'am. Saira ma'am.
Bye, ma'am.